Hello everyone, welcome back to another video. This is the chapter 9 of Python series and we are going to learn input and output functions in Python. So without any delay, let's get started. So first of all, in Python, when we have to take input from the user, we can use input function. So if I want to take the input of name from the user, so I will use a variable name and then I will write input and I will write the command also here that what do you want your user will enter. Let's say I can say enter your name. So in this line we are taking the input from the user and that input will be stored in the variable which is named like name. Okay, then we will simply print the value of name. No semicolon, yes, because this is Python. Now I am running this code by control F5. I hope this is not running. Control F5. That's what and the program is running. We can see here it's yes. So we got the command from the compiler that enter your name. So my name is Pragati, I'm entering my name and Pragati Sahu. So it will print my name. So that's how we can take input from the user in Python. Moving ahead, if I want to take an input of integer, let's suppose I want my user to enter only a number, then I can say that int is a will be typecast our value which the user will enter. Let's suppose if I will not use the int function outside the input, then the value we will get from the user will be considered as a string. So let's take this print num, and now we can simply run this code, enter a number 45 and our number will be printed. For example, if I remove this int outside from my input, okay, then what it will do, let's check. Let's suppose I have entered 56, not here, here it is 56. It will directly print the 56, but this 56 is different from our previous one because now the 56 value is the type of string. Let's suppose I can write type of num. Okay, I am printing the type of the variable num, and what its type. So it will print, let's suppose I have written 56, then it told me that the 56 is the part of string class, not an integer. So to convert into integer, because I want to use an arithmetic operation or maybe on some other operation of integers, I will use a function outside my int which says that convert my value which is given by the user to an integer. So this you have to do. ओके कि अगर आपको कोई एक्स्ट्रा वैल्यू चाहिए जो कि हमारे स्ट्रिंग नहीं है, आपको स्ट्रिंग नहीं चाहिए, इंटीजर चाहिए, फ्लोट चाहिए, एनीथिंग यू वांट, देन यू हैव टू कन्वर्ट इट. ओके, then only Python will get कि yes, that value, particular value will be stored as integer. Now you can check that मैंने integer में convert कर दिया. Now you can check by running this code simply and I'm giving the value 67. Yes, we got it. We got the class int. So this is how int function, input function works with int and other variables. जैसे कि हमने बहुत सारे multiple variables को print कराया था using print function. Similarly, we can take multiple inputs from the user using split function and map function. So here what I am doing, I have want to take the input of 3 integers. So first I have used map function. Okay, what is this map function? We will understand. Now I have passed 2 values. First, type of my values which I want to take, and second, the input function. And
here I have passes the command inside the input function that I have to, you can say, enter the numbers, and then I have split. Now what happened? For example, like this, if I write this simply like this, enter the numbers and the value will be stored in ABC. So let's see what will happen. Enter the numbers. So I have taken 45, 56, 67. So there is an error. Why there are two menu values to unpack? Because it have to now unpack the values and store in particular variables. What we want? We want that if I am giving, if a user is giving three values, so the first value will be stored in the A. Let's suppose हमने क्या value दी थी? What we value was 45. Okay, first value 45 will be stored in A, then 56 will be stored in C, B, and then like this. We want this. So for that, what we have to use? We have to use map function. First, we have to split these three values. That the user, आपने जो तीन values दी हैं command में 45, 56, तो आपको इसको पहले split करना पड़ेगा. And then after splitting these values, for example, split मतलब 45 अलग हो गया, 56 अलग हो गया, and 67 अलग हो गया. Because here, what we have done? We have given the values only in one command. Let's see here. Okay, in only one line. So सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इनको split करेगा. So we will use split function. Then what? जब split हो गई values, तो उनको map भी तो करना पड़ेगा to particular variables. Okay, अब 45 हो गया हमारे पास, 56 हो गया, 67 हो गया. Now we have to told the compiler that store this 45 into A, store this 56 into B, and store this 67 into C. So for that, we are using map function. It is mapping the values. Okay, and what values they are? They are integers, so we are passing the value int. Okay, because we have to convert those values. Because input function जो भी होता है, जब भी हम input function use करते हैं, we know कि जो भी values हमको मिलेगी वो as a string मिलेगी. तो उसको convert करने के लिए हमने यहाँ पर int pass किया. Now check our output. फिर से एक बार कोड को रन करते हैं. Enter the numbers 45, 56, 67. Now the numbers will be printed like this. The numbers are 45, 56 and 67. Like it's similar one, but we have to take multiple inputs. आप चाहो अगर आपको confused लग रहा है तो आप अलग अलग भी नंबर ले, अलग अलग भी इनपुट ले सकते हो, लेकिन आगे चल के हम इसको और यूज करेंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा. Now moving ahead. Now in the next example, we have to take input for our set and list. हमने इसके बारे में पढ़ा था अपने literals में. In the literals video, I have told you about the list and set. तो अगर हम मुझे इसके लिए value input लेनी है हमको user से, so how we can take it? Using only map and split function. Okay, so using map and split function, how we can use? First, we can take any variable like this, that list, and here we are using a second function, that is list. Function 1, list. Why function? Why we need this function? Because it will convert this whole value into a list. Okay, जैसे int था, int में convert करने के लिए, to convert any variable to int, any value to int, we are taking an int function outside that particular value, int and value. What will do? It will cast the value to int या to integer. जो भी उसका डेटा टाइप होगा, जिस टाइप की वो वैल्यू होगी उसको कन्वर्ट कर देगा. सिमिलरली वी आर यूजिंग अ लिस्ट for converting this particular value which we will got from the user हमको अगर list देगा, list में क्या होता है? We have multiple data points. For example, I am passed 10, 20, 30, 40, 50. Now this set of data will be converted to list using this list function. So first we have used what? List function to store the value of data into a list. Next we are using map function. And inside map, we know we have to pass two values. First, we have to pass the type, कि किस type की values होगी. दूसरा, we have to type the input function. Okay, input function.
सो द सेम वी आर डूइंग हियर. सेकंड फंक्शन हमारा हो गया इनपुट फंक्शन जो हमने अपना यूज किया है. थर्ड हमने इनपुट फंक्शन यूज किया है एंड वी हैव लर्न अबाउट दिस कि इनपुट फंक्शन क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है. थर्ड फंक्शन इज दिस. Okay, now I will clear all these things for a better understanding. Yeah, okay, yes. So हमारा ये हो गया थर्ड फंक्शन. फोर्थ फंक्शन हमारा हो गया स्प्लिट. स्प्लिट किस लिए, कि इन वैल्यूज को जो आपने दिया है उसको स्प्लिट करके देन उसको स्टोर करने का काम जो होगा वो स्प्लिट का होगा. इट विल स्प्लिट द values, it will split the all the data into that particular values and will store. ओके, अब मैप का क्या क्या होगा, टू मैप दोज वैल्यूज. ओके, अब लिस्ट है, लिस्ट हमें करना है तो लिस्ट तो एक ही वेरिएबल है, यहाँ मल्टीपल वैल्यूज तो दे ही नहीं रहे हैं, लेकिन उसके इंडेक्सेस, उसको स्टोरेज, उसको प्रॉपर स्टोर करने की जगह वो कौन देगा, वो मैप फंक्शन देगा. ओके, एंड आउटसाइड वी हैव पास कि भाई इसको जो भी आपने मैप किया है ना, ये जितनी वैल्यूज आपने स्टोर करी है 10 20 30 40 50, इसको आप क्या कर दो, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दो. And in the second line we have converted all these things into a set. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, we all know, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. लिस्ट में क्या होता है कि हम मल्टीपल डेटा स्टोर करते हैं, सेट में भी हम वही करते हैं, लेकिन लिस्ट में आप डुप्लीकेट वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो. ओके, लेकिन सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं होते हैं. डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड. So this is the major difference between set and list. This is just an example कि कैसे आप यूज कर सकते हो मैप एंड स्प्लिट फंक्शन टू स्टोर योर वैल्यूज. जब हम लिस्ट को और सेट को आगे चल के डिटेल में पढ़ रहे होंगे तब मैं फिर से कवर करूंगी. सो अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, आपको ट्रिकी लग रहा है, सो यू कैन स्किप दिस पार्ट. वी आर ओनली अंडरस्टैंडिंग द इनपुट फंक्शन इन दिस वीडियो. टू मेक इट मोर क्लियर आई हैव टेकन मोर एग्जाम्पल्स. Now we will run this code. First I will clear all this from the terminal. Okay, list elements, let's suppose 10 20 30 40 50 60, and I will repeat one of them because we are taking a list. Now in set we cannot repeat particular element, so I am taking this 5 elements. Now you can see list में अगर ये list में duplicate elements allowed नहीं होते then we will give it will give an error, but it is not, and it has printed all the elements we have given, and similarly it has printed all the elements we have given into a set. अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, सेट में क्या हुआ, हमारा ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है. हमने 10 20 30 40 50 दिया था, लेकिन 40 10 50 20 30 दिया बिकॉज वी आर यूजिंग मैप फंक्शन. मैप ने क्या किया, उसको पर्टिकुलर एलिमेंट को मैप किया है. दैट्स व्हाई. Okay, now we are moving the second part of this video. So for the second part I have to move to the slide and we will learn about the display output in Python. Okay, we will only use print function but with some extra functionalities, extra properties of print function we will learn in this. Okay, so print function में सबसे पहले हमें पता है print function सबने यूज किया है. print function में हमने देखा था कि let me move my pen is this. Okay, print function में हमें पता है हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पास करनी है, या तो हमें स्ट्रिंग पास करनी है. अगर डबल कोट्स में हमें एज इट इज कुछ प्रिंट करना है तो हम डबल कोट्स में प्रिंट कर सकते हैं. लेकिन प्रिंट फंक्शन के और भी पैरामीटर्स होते हैं. स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होता है, उसके और भी पैरामीटर्स होते हैं. दे आर सेपरेटर एंड एंड. It means if you want to separate your output in by particular any delimiter, like let's suppose with comma or with double quotes or with backslash or forward slash or like that, so you can use this particular parameter and pass inside your print function. Or if you want to end your output with any particular special character or special variable or special value, then you can give the value to n. Okay, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी है कि भाई वैल्यू तो हम पास करते हैं, दैट इज वैल्यू बाय डिफॉल्ट, एंड दिस इज द मैंडेटरी पैरामीटर वैल्यू. ये आपको देना ही है क्योंकि आप प्रिंट करो तो आपको वैल्यू तो दोगे. दीज आर ऑप्शनल, separator and that's why we haven't used them. Okay, separator specify how to separate the objects if there are more than one.
ओके, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर आपने कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट इट विल सेपरेट देम विद स्पेस। ओके, एंड में क्या होता है, एंड क्या होता है, एंड में हम क्या पास करते हैं, स्पेसिफाई व्हाट टू प्रिंट एट द एंड, डिफॉल्ट इज न्यू लाइन, दिस सिग्निफाइज न्यू लाइन। ओके, इट रिटर्न्स द आउटपुट टू द स्क्रीन, वी ऑल नो दिस कि भाई प्रिंट फंक्शन क्या करता है, प्रिंट करता है। इसके दो एग्जांपल्स है जो इसमें कवर करने वाली हूँ मैं। सो हियर आर टू एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने ये एग्जांपल लिया है यहाँ पर, प्रिंट मेथड है मेरा ये। ओके, दिस इज अ कमेंट टू एक्सप्लेन यू ऑल। सो कोड आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो कोड मैंने गिटहब पे पोस्ट करती हूँ, तो आप प्लीज को चेक करना, एंड यू कैन एडिट इट, यू कैन रन इट इन योर सिस्टम, जिससे कि आप और एग्जाम्पल्स रन कर पाओ, मेकिंग योर ओन एग्जाम्पल्स, और जो कोड मैं बताती हूँ वो भी आप अपने सिस्टम पर रन कर पाओ। ओके, so I'm just printing the two values, that is C at the R and print COD. I'm saving this and running this. You all know what it will print. But in the second line, you can see I have printing multiple objects. Okay, I have to comment it. Now I'm running it. Okay, तो सिंपली उसने क्या किया, CODE उसने प्रिंट कर दिया विथ सम स्पेस, बिकॉज बाय डिफॉल्ट हमने हम यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट करो, ये आप 4 ऑब्जेक्ट्स को ट्रीट करो ऐसा। अब 4 ऑब्जेक्ट्स है, आपने ना कोई सेपरेटर दिया ना कोई एंड दिया, तो वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट सेपरेट किससे करेगा, विद अ स्पेस। सो स्पेस से सेपरेट किया सबको, स्पेस है सबके बीच में, एंड एंड हमने एंड पैरामीटर भी नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट अगर आप इसके नीचे कुछ भी प्रिंट करोगे, लेट्स सपोज मैंने प्रिंट किया ए, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, न्यू लाइन जनरेट कर देगा, बिकॉज वी हैवंट गिवन द एंड पैरामीटर। ओके, ऑब्वियसली उसने न्यू लाइन में कर दिया। सिमिलरली आप सी एट द आर में देखो, हमने जो हमारा फर्स्ट प्रिंट था वहां भी हमने कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा पैरामीटर नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट उसने वही लिया जो हमने देखा। अगर हम सेपरेटर की वैल्यू एंड एंड की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं इनसाइड अ प्रिंट फंक्शन, लाइक दिस एंड लाइक दिस। ओके, अब हम इसको प्रोवाइड करते हैं और उसको रन करते हैं। एंड में मैंने दिया हैशटैग, तो C@R हैशटैग आ गया, क्योंकि यहाँ पे हैशटैग था तो उसने न्यू लाइन को कंसिडर नहीं किया, वरना ऑब्वियसली क्या करता, ऑटोमेटिकली न्यू लाइन कर देता। व्हाट आई मीन, एंड की वैल्यू बाय डिफॉल्ट होती है हमारी न्यू लाइन, तो मैंने यहाँ पर एंड की वैल्यू हैशटैग दी, तो उसने न्यू लाइन जनरेट नहीं करी, एंड उसने सेम लाइन में हमारी नेक्स्ट लाइन को भी प्रिंट कर दिया, दैट इज दिस, यू आर सीइंग। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट लाइन का आउटपुट है, एंड ये C@# हमारा फर्स्ट लाइन का आउटपुट है, फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट है। सो CODE, these are 4 objects, different object, and I have separated them with @. तो उसने क्या प्रिंट किया, C, then @, then O, then @, then D, then E, like this। ओके, तो उसने सेपरेटर कैसे यूज किया, एट द रेट एंड हैशटैग कैसे यूज किया, so you I think you can understand this, what the difference is between this and this। Now I hope you can easily use this print statement and its parameters with using your own examples, and you can make variety of examples and test them how they work. Code will be available in the description box and you can easily access them. So that's it from my side in this video. Thank you everyone for watching till now. We'll meet you in next video. Till then, follow us, like this video, comment down if you have any query, and support us. Thank you everyone. Bye bye.